So, dear viewers, here we are going to take an example of Newton-Leibniz formula. Okay. So, where first of all, where we will use the Newton-Leibniz formula. So, we can use the Newton-Leibniz formula in all the definite integration. In any definite integration. So, definite integration को solve करने के लिए we can use Newton-Leibniz formula. Okay. So, you will get a sum of the problem in which integration of that thing will be very integration of that function will be very difficult. So, solving that definite integration we can use the Newton-Leibniz formula. So, किसी भी definite integration को अगर solve करना है और उसको है जो तो हम लोग Newton-Leibniz को यूज कर सकते हैं. मेनली Newton-Leibniz when we can use to differentiate a definite integration. To differentiate and a definite integration we can use Newton-Leibniz formula. Okay, so suppose this is a function, this is the, you can see this is a definite integration, and definite integration of this function, you can see this is a function of f of x alpha. So this is the function of x and alpha, and this is u1 alpha to u2 alpha. The upper limit is u1 alpha and the lower limit is u2 alpha. So we have to integrate this function from u2 alpha to u1 alpha. Okay, so ऐसे problem में, such problem here we can use Newton-Leibniz. So Newton-Leibniz को क्या use करना है हमें? We can differentiate this function using Newton-Leibniz. Okay, so what is the formula of Newton-Leibniz? Here you can see. Okay, d of alpha. Okay, d of, we can say d of phi alpha by d alpha. Okay, हम लोग को क्या करना है, इसको जो इस फंक्शन को इस phi alpha है ना, because the upper limit is alpha and the lower limit is also in alpha, so the final solution will be in the alpha. That's why we have written it the phi alpha. Okay, so d of phi alpha by d alpha. So using Newton-Leibniz, what we can write it? Okay, u2 alpha, u1 alpha. Okay, partial differentiation dou alpha of f of x comma alpha dx plus, okay, then plus sign. Then क्या करना है हमें, जो सबसे पहले x की जगह पे u1 अल्फा को रखना है. तो क्या करना है, सबसे पहले differentiation of u1 alpha d alpha and then x की जगह पे आपको क्या रखना है, u1 alpha. So f of, है ना, u1 alpha comma alpha minus d, then lower limit का differentiation, then f of u2 alpha comma alpha. Okay, so once again I am just आपको बता रहा हूँ कि suppose कोई function है, suppose this is a function or in the form of alpha, because this is the function f of x alpha and we are integrating it from u1 alpha to u2 alpha with respect to dx. So the final result will be in the form of alpha. So here we are using Newton-Leibniz formula. How we are using this Newton-Leibniz formula? Suppose we are differentiating this d phi alpha with respect to alpha. We are just differentiating this with respect to alpha. So formula क्या है? First of all आपको inner function, this function को क्या है, partially differentiate करना है. We have to partially differentiate with respect to alpha. So here we are differentiating it, partially differentiating with respect to alpha. Okay. Then क्या करना है, आपको अपर लिमिट का है जो डिफरेंशिएशन करना है. सो डी ऑफ u1 अल्फा बाय d अल्फा. सो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू f ऑफ फंक्शन में x की जगह पे क्या करना है, u1 अल्फा को पुट करना है. सो फंक्शन में क्या करना है, x की जगह पे हमने पुट कर दिया f ऑफ u1 अल्फा कॉमा अल्फा, देन माइनस साइन के साथ, देन लोअर लिमिट को है जो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है d ऑफ u2 अल्फा d अल्फा इनटू अगेन x की जगह पे आपको है जो लोअर लिमिट को पुट करना है f ऑफ u2 अल्फा कॉमा अल्फा. Okay, so this is the Newton-Leibniz general formula of Newton-Leibniz. Okay, so it's a clear. अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, और you can take a screenshot. आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that आपको जो इस फॉर्मूला को याद करने में इजी होगा. अभी हम लोग क्या करेंगे, we will take an example and we will solve a problem. Okay.